First of all, let us introduce two of the most special guests, and I really appreciate both of you, Keyshawn and Faith Netherly, for driving from that far, 4.5 hours. So people in this community, I don't know what to tell you. To be honest, I'm gonna keep it 100. If a person can drive 4.5 hours to come stand just to show solidarity and just to speak up the truth, what is your excuse? It's not cold. It's a beautiful sunny day in Michigan. It's 50 degrees. We do barbecues in this weather. This is not cold at all. You're sitting. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you a start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country, and 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers not just on the Pakistani side, even India. The river, the 80% of the water in money from drugs. Have expensive lawyers and spend millions and millions of dollars, when half the money is going into debt servicing because money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from drugs, the way it is treated, it's not the same. The way that poor countries are being plundered by their elites. It's not happening. In my country, when I took charge of our government a year back, in the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, it is important. Just in 10 years, the Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know. All right, sorry about the turbulence again. Can you hear me now? Yeah, it works fine. Thank you. Appreciate it. Sorry about that. We were trying to find the important clip, and at the last moment, as you know, we're daisies and we're lazy, so we didn't do it, and we didn't find the right clip. Don't want to show you a 50-minute speech and bore you out. So, all in all, on 27 September 2019, Imran Khan took a podium in United Nations and spoke up for Muslims. He didn't spoke up just for Pakistanis. He didn't just speak up the issues that Pakistanis was facing. He spoke up for Kashmir. He spoke up for Palestine. He spoke up for one ummah. Remember this, you will never, and I could write it down for you in any legal form that you want to bring to me today. If you're not united, you'll never achieve your goals. And what are our goals? What do we want? We want just peaceful life. We don't want to be blamed as terrorists. I don't know if any of you actually saw recently, Fox ran a clip about a Dearborn school where they simply were protesting against the war crimes that the terrorist Israel is recently committing. And they called them bunch of terrorists.
most of us probably miss that clip because we don't even pay attention to what goes around us. We just sit, talk, enjoy our tea, and that's it. So as Imran Khan said in United Nations, you know, we represent Islam, and when you say something like that, it actually hurts us. Because we are human, just like any other religion who are considered humans, you know? So that's why we joined here together to raise our voice for Imran Khan, because I personally believe they took Imran Khan out to make a easier path for the occupation known as Israel. I don't call it a country. I don't recognize it as a state because it is just a terrorist occupation for past 70 years. And they have murdered, kicked people out of their homes, kidnapped, brutalized Palestinians for 7 decades. Sounds very small when I say 7 decades, right? Imagine, that's 70 years of oppression. And why the solution has never been resolved? Because our leaders are cowards, sold out souls that are sleeping. But before I take too much time and forget about what I want to talk about at the end, because I got some important that I want to talk about, I will start with my first public speakers today. Abbas Alam, if you want to say a few words to the community. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys can hear me. Today we gather here for a good cause. We gather here for Palestine. As Musa mentioned a few minutes earlier, that Imran Khan was the first leader from Pakistan to raise voice for Palestine. Have you ever heard anyone before in Pakistan raising voice for Palestine like Imran Khan did? If you did, let me know. Yeah, Yasser Arafat came to Pakistan. Many other people came to Pakistan, but no one has bluntly went on the UN podium and spoke for Palestine, for Kashmir. And today you see, we're all gathered here, and most of us are missing, but we will keep on coming. We will still raise our voices. Yes, Pakistani politicians are corrupt. Pakistani generals are corrupt. But there is a bigger hand on them that is supporting them. That has been supporting these corrupt generals, kings, and politicians for not decades, but for centuries. Not for today, from 100 years ago. Look what's happening in Africa. You think African people are not human? Why? Just because they're black, they're not human? Where do we get this idea from? Why? Why do we live in such a materialistic world? Why do we only care about eating samosa in our house or biryani and then call it a day? Why can't we do a good thing one day? Are we Muslim great? Can we call ourselves great? Unfortunately, no. I'll give you small things. We are born as a Muslim in a beautiful religion, but do we follow it? Some of us try. I'm not here to judge anyone. I must judge myself first. But do we care about anybody else? No, we don't. We have respect for no one. We don't respect anyone. Elder, youngers, no one. We swear at each other. We think it's cool. We look down upon each other. We show attitude towards one each other. We swear at each other all the time, backbite at each other. We always think of ourselves as high compared to anyone else. Oh, just because he's an engineer, he's a factory worker, how can he be better than me? Do we understand each other? I don't think so. The list goes on and on. I can talk, many things. But today, what's happening today is not a matter of a day. It's been going on since centuries. And we let it continue. We will always let it continue because we want to ignore it. We don't have time for anyone else. We have no time to think that, okay, what did we do wrong today? How can we make it better the next day? From Indonesia all the way to Turkey, tell me any Muslim country that is not disastrous. Tell me any Muslim country that is doing good, or the people of the country are doing good.
How many engineers, how many doctors, how many professional factory workers we get? We don't. We're always here to just talk about others. We're never here to judge ourselves. We must judge ourselves first before we go anywhere else. Our families are being destroyed because of that. Not economically or bombing, but also culturally. Our mindset is dead. We have no mindset. And that's sad to see that our young generation is coming with no mindset but of materialistic. And I want you all to go think today at home, how can we change this? Are we still going to continue watching this and destroy our families? Or are we going to change it today? Thank you very much. Assalamu alaikum. Jazakallah, Abbas. I think what Abbas was trying to make a point here is be human. Be one. Your issues, anybody else's issues in this community are same. Why Palestine has a stronger voice? Have you guys ever thought about that? Because all of us, rest of us, you know, and we go back homes and we just deal with our regular life. We make voices on our own podiums which are nothing but noise. But when you raise it together as human, it becomes a sound that bothers the oppressors. That sound that in social media even, and like, you know, it's funny that Israeli government get bothered on social media about it. They don't even like seeing that. That's why they're actually paying bots currently. I want you to raise your voice one time for Palestine. And I don't know if you know, most of these people know the slogan, from the river to the sea, Palestine will be free. So let's raise our voices for Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. from the river to the sea, Palestine will be free. free, free, Palestine. free, free. Palestine. thank you. See, I'm louder than y'all. Got a mic. Come on, y'all ain't need to me. Our second speaker today will be Dr. Qamar Jafri. I'd like you to welcome at this point and please share your thoughts with us. Thank you. एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबका की काशगर, हम यहाँ जमा हुए हैं पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के लिए। दो इशू हैं, दोनों ही इशू रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स के ही इशू हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो फ़लस्तीन हो। बचपन से लेके अब तक हम देखते आ रहे हैं कि फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो जबर हो रहा है वो आज हम इस स्टेज तक आ गए हैं, हल होने का नाम नहीं ले रहा। और आज भी हमारे चंद मुसलमान भाई और चंद मुसलमान कंट्रीज अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल ये है कि जहां कहीं भी जुल्म है हम जुल्म के खिलाफ हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो फलस्तीन है। इस वक्त पूरी दुनिया में इतने मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जो आजाद सिर्फ गजा ही है, बाकी सब गुलाम है। Only the Gaza is free. All our Muslim countries are slaves. Just you speaking, not doing anything. 70 साल से पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अब हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे एक से एक, आपको सब नजर आएगा। वो गधा दोबारा आ गया पाकिस्तान में चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए। और भाई 16 महीने आपके भाई ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? अंडा बड़ा जीरो। जो तुम आगे करोगे वो कह रहा जी हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। 16 महीने से आपकी हुकूमत थी, आपने क्या तकदीर बदली? जो अब आगे करोगे, पाकिस्तान को लूटते हो और भागा के खर्च करते हो, दोबारा लूटने के लिए आ गए हो। और जो बंदा पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करता है उसको आपने जेल में डाला है, उसका नाम लेना भी हमारे। मैं ये कहना चाहूंगा एक शेर, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। फ्री 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 बात करते हैं पाकिस्तान की। भाई 70 साल 70 साल हो गए, हम यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान में इन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है उसको गद्दार वतन करार देके उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये हिस्ट्री बचपन से लेके अब तक देखते आ रहे हैं। जितनी
जमातें बनी, असेंबली में जो चाहती है उनको लेके आकर उनको ऊपर हमारे ऊपर उनको मुसल्लत कर देती है। लेकिन इमरान खान ने एक नजरिया दिया है। इमरान खान एक पर्सन का नाम नहीं है, एक नजरिए का नाम है। आप किसी बंदे को मार तो सकते हो लेकिन नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। यह नजरिया पूरी दुनिया में है। अब यही चीज फलस्तीन में अगर बात करें, दो डिफरेंट इश्यूज हैं लेकिन दोनों का जो मेन मरकज है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो फलस्तीन है। अब लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को हमने, कनाडा ने ये कहा कि जब पाकिस्तान इमदाद ना दें और ये तो गलत है पाकिस्तान के। भाई मसला ये है 73 साल से पाकिस्तान में ह्यूमन वायलेशन हो रही है। अगर हर कोई ये बात कर रहा है कि उसको लिए बात करें तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ। वी आर पाकिस्तानी, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर नॉट अगेंस्ट आवर आर्मी, वी आर विद आवर कंट्री, वी आर विद आवर आर्मी, बट वी आर अगेंस्ट दोस्त गिनती के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। यार सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने नहीं बचा तो किसने हुकूमत करोगे? अगर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को लीड करते हो, पाकिस्तान के लिए सोचो तो सही। पाकिस्तान कहाँ आगे खड़ा हो गया है? आप कंपेयर करते हैं इंडिया से। भाई आप पाकिस्तान को किससे कंपेयर कर रहे हो? वो यार हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है? हम इसी चीज के खिलाफ है कि भाई आप सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ये चंद लोग हैं भाई, मसला ये है कि आपको अपना हक अदा करना है, भले एक बंदा या दो बंदा हो। आप आए अपने हक अदा कर दिया। हमारे सामने जो रहनुमाई है जिससे हम गाइडेंस लेते हैं वो करबला है। 72 थे और वहां हजारों थे, लेकिन उन 72 ने अपना काम अंजाम दिया, शहादत पा दी। आज किनका नाम है? वो हजारों लोग, यजीद उनका नाम नहीं, कोई नहीं है। और वो जो 72 जो हुसैन के मानने वाले थे वो आज अभी तक क़यामत जिंदा है। तो वी आर हुसैनी हियर, वी आर मुस्लिम, वी आर हुसैनी, वी आर विद फलस्तीन, वी आर विद पाकिस्तान, वी आर विद पीटीआई, वी आर विद इमरान खान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ये जुल्म जबर करके किसी को नहीं दबा सकते। पाकिस्तान में आप कुछ भी कर लें, जब भी कभी फ्रीडम की बात होगी इमरान खान की बात होगी, जब कभी आजादी की बात होगी इमरान खान की बात होगी, जब कभी ह्यूमन राइट्स की बात होगी इमरान खान ने हमें यूनाइट किया है। वी आर नॉट पंजाबी, वी आर नॉट उर्दू स्पीकिंग, वी आर नॉट सिंधी, वी आर ओनली पाकिस्तानी। और वो किसने किया है? इमरान खान ने। आज तक कोई लीडर नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में जिसने पाकिस्तान की बात की हो। हर कोई आगे अपनी फिरकावरायत की बात करता है या मजहबियत की बात करता है या इंसानियत की बात करता है, लेकिन वाहिद इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की बात की है। तो देयरफॉर वी आर विद इमरान खान। और विदाउट इमरान खान व्हाटएवर यू ब्रिंग, पीटीआई, अगर कोई भी आता है पीटीआई को लेके, अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई हमारे लिए कुछ नहीं है। पीटीआई का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पीटीआई है। बाकी हमारे बाकी जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं सारे ममालिक खामोश बैठे हैं। जुल्म हो रहा है, जुल्म। भाई आप कुछ करो तो सही। जबान हिलाने से कुछ नहीं होता। आपको कुछ करना चाहिए। फलस्तीन में आप इमदाद नहीं भेज रहे, आप बात नहीं कर रहे, वहां बच्चे मर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द किड्स, राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कितने बच्चे मार के कौन बोलने वाला है? कोई नहीं। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ एक ग़ज़ा ही आजाद है, पाकिस्तान गुलाम है। तो बस मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हम यहाँ जमा हुए हैं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए और फलस्तीन के लिए। इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह इमरान खान आजाद होगा। आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान को आजाद कराएंगे उस टोले से, उस चंद मुट्ठी भर लोगों से जो पाकिस्तान को लूटते हैं, खाते हैं और निकल जाते हैं। हमें गलत ना समझा जाए। वी आर विद अवर आर्मी, वी आर विद अवर कंट्री, वी आर विद अवर एस्टेब्लिशमेंट, बट ओनली दोस्त लिटिल बिट लाइक 15-16 बंदे हैं भाई। वो 15-16 ही बंदे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और यू नो उनको नाम लेना जरूरी नहीं है। वी आर अगेंस्ट दोस पीपल, दैट्स इट। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। जस्ट गिव अस अ राइट, गिव अस अ, हमें हकूक दिए जाए आजादी के और पाकिस्तान में हमें मौका दिया जाए, फिर हम बताते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। हम यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान के लिए वो कुछ करते हैं जो वहां रह के नहीं कर सकते थे। यहाँ से हम जरा मुबादला भेजते, यहाँ से हम पैसे भेजते, पाकिस्तान को सपोर्ट करते। लिहाजा आप हमें आजादी दे कि हम उन लोगों को लेकर आए जो पाकिस्तान के लिए
सोचते हैं, इंसानियत की बात करते हैं और हक की बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई PTI, PTI पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, Free, 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 Palestine, free, Palestine, from the river to the sea. Palestine will be free. I actually like that slogan because that actually bothers a lot of people, and I love that about it. Anyways, thank you so much, Dr. Saab. Very valid points that you discussed today. For the next list of speakers, I'll try to, ask you to just keep it as short as possible because we do have our main speakers who drove a lot further to speak with us today. So next, Arubhai, if you can come and take the stage and share your views. Thank you so much. दो मिनट नहीं ओके इमरान खान के बारे में एक बात जो मैंने नोट की वो ये कि एवरी टाइम द आर्गुमेंट गिवन अगेंस्ट इमरान खान द आर्गुमेंट वाज करेक्ट बट ही प्रूव्ड द आर्गुमेंट रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। क्रिकेटर बनना चाहता था, उसके अपने कजन्स माजिद खान ने और जावेद वर्की ने कहा कि तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते, बन के दिखा दिया उसने। आर्गुमेंट वाज करेक्ट, ही डिड नॉट हैव any ability to become a professional cricketer, but he proved the argument wrong. उसके बाद फास्ट बॉलर बनना चाहता था, उसका बॉलिंग एक्शन ही गलत था, उसको कहा गया कि तुम नहीं बन सकते, आर्गुमेंट वाज करेक्ट बट ही प्रूव्ड द आर्गुमेंट रॉन्ग। उसके बाद कैप्टन बना तो लोगों ने कहा ये कैप्टन नहीं बन सकता, लेकिन उसने कैप्टन बन के दिखाया। वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, इंडिया को इंडिया में हराया और फिर वर्ल्ड कप भी जिता दिया। वर्ल्ड कप जो जिताया उसकी भी कहानी ये सबको मालूम है कि 2-3 मैचेस शुरू में हार गए थे और किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन वो बात सही थी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। द आर्गुमेंट वाज गिवन अगेंस्ट इमरान खान दैट यू कैन नॉट विन दिस वर्ल्ड कप, बट ही सेड दिस वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ही प्रूव्ड द आर्गुमेंट रॉन्ग। उसके बाद वो सियासत में, उसके बाद हॉस्पिटल में आया, लोगों ने कहा हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और एक डॉक्टर था आउट ऑफ 19 उसने कहा बन तो जाएगा लेकिन मुफ्त इलाज नहीं हो सकता। ही प्रूव्ड द आर्गुमेंट रॉन्ग बट द आर्गुमेंट वाज करेक्ट बट ही प्रूव्ड इट रॉन्ग। सियासत में आया, लोगों ने मजाक उड़ाया, 22 साल तक मजाक उड़ाते रहे, बट ही फाइनली प्रूव्ड द आर्गुमेंट रॉन्ग व्हिच वाज ओरिजिनली करेक्ट। वजीर आजम बना, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों के मुताबिक तब्दील करूंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोग आज भी मजाक उड़ा रहे हैं, बट इन माई हार्ट आई नो ही विल डू इट because he has something maybe divine or whatever. Every single time the argument given against him, the argument was correct, but he has proved it wrong every single time. Thank you very much. Thank you, Arubhai, and I think I have the answer for you. Imran Khan has Iman. Beshak, yes sir. I check myself all the time. Yes, sir. Do you have Iman? In past 10 days, I had the funny threats. I had the one where I was like, really bro, you're gonna get on social media and say this? But doesn't stop me. I have family too. I have kids too. I'm scared someday, they might knock on my door and be like, listen, we heard you said that on Twitter, you gotta go. Yep. Does that stop me or bother me? No. If you actually follow Imran Khan and actually listen to him, no, lock me up, bro. You know what I'm gonna do? I'm gonna read more Quran. I'm gonna do my prayers. I'm gonna be a better human. I'm gonna be a better Muslim. And when I come out, I'm gonna speak harder for the rights of others. So that's what Imran Khan has, and that's what every Muslim, that's what every human needs in them. Believe yourself, and you can achieve anything.
worldly, religiously, whatever you want to say, you could achieve it. Next, I would like to invite Sister Aisha. She's actually a part of PTI social media team too, so please share your views. Thank you so much.